Let's get you the latest updates from the Supreme Court on the farm laws. After pulling up the centre yesterday, the Supreme Court today has questioned the farmers, and particularly the fact that these farmer unions have said they don't want a committee to be set up. The CJI has said that we want the farmers to appear before the panel, and no power can stop the top court from going ahead and forming a committee. Now, the CJI has also spoken about, in fact, putting a hold on the farm law, saying we can suspend it, but there's no question of doing it permanently. It cannot be done indefinitely. The Supreme Court has also issued a notice to farmers on their tractor rally they were planning on Republic Day. This is based on the Delhi police's plea seeking an injunction on the same. So that hearing will happen on Monday. There's also been another interesting development in the top court, which is that the centre's lawyer has highlighted that intel reports suggest Khalistanis have also infiltrated the stir. The CGI has sought an affidavit on that issue. So those are some of the big headlines and the takeaways from the hearing so far. In case you missed out on the live updates we've been putting out, let me also tell you the minute-by-minute updates that are coming in and the hearing that's underway in the Supreme Court. Anand Patel is joining us with that. Anand, what's currently happening in the Supreme Court? Well, the Chief Justice is trying to different farmer union representatives, the lawyers who are there in this virtual hearing, and try to ascertain as to whether they will be a part of the proceedings of the committee. The Supreme Court obviously wants to assure itself that enough representation is there from the farmer union side, from the farmer sides, when the committee comes up with its proceedings, because here we are in a situation that the farmer unions which are there at the protesting site, some 400 farmer unions, and 41 of them are in negotiations with the government. Their legal representatives are conspicuous by their absence. They've completely boycotted today's proceedings, Akshita. This after their press release yesterday, in which they had clearly stepped away from any proceedings of the committee which will be formed by the Supreme Court. So this is very important, and that is the reason why we are hearing, we are looking at this situation that the Chief Justice had to assure itself and the bench that whether there will be enough representatives from the farmer unions to take part in the committee which it is going to form. And also a very important statement coming here from inside, that the Chief Justice has just said that we are passing the order. We are going to suspend the implementation of the 3 Farm Acts. This is a big breaking news which is coming in at this point in time, Akshita, that the Chief Justice has again pointed out that the court is willing to suspend the implementation of the 3 Farm Acts, as the Chief Justice had said yesterday. So it looks very imminent that the 3 farm laws will be kept in abeyance as long as the committee proceedings are on, till the point in time it submits its report. This is big break. You're telling us big breaking news. The CGI is saying that we're going ahead and passing the order after discussions with regards to the committee and the formation. The CGI has said we are going to suspend the implementation of the 3 farm laws. This suspension is going to be temporary till there is some sort of solution that comes out from a committee. The decks seem to be cleared at this point for, in fact, the formation of a committee. But this is the big headline. The CGI saying we are going to suspend the implementation of the 3 farm laws. We are passing the order. This is what the Chief Justice has said now. So, Anand, looks like the formation of a committee here is imminent till there is some sort of solution from the committee. Looks like the farm laws will be on hold now. This is yes, absolutely. This is breaking news, Akshita. The implementation of the 3 farm laws have been stayed until further orders, and a 4-member committee has been set up. So we can break this news at this point in time, Akshita, that the Supreme Court had stayed the implementation of the 3 controversial farm laws over which the farmers are agitating for over 45 days now, and a 4-member committee has been set up. It remains to be seen as to who are the members of this committee, but the Supreme Court has gone ahead and formed a 4-member committee, a legal committee which will be part of the judicial process to look into all the aspects of the 3 farm laws, clause by clause, talk to both the sides, the centre and the farmer unions, and then submit its report to the Supreme Court bench headed by the Chief Justice. This is huge, Akshita. At this point in time, we can say that the implementation of the 3 farm laws, as was expected during the observations yesterday, have been stayed by the Supreme Court of India.
Akshita. So this is a stay on the 3 laws. It's not permanent. They've said that it is till further orders. A 4-member committee has been set up now to look into these particular laws and the demands of the protesting farmers. This is a huge development that's come in. The CJI-led bench has decided to go ahead and stay the implementation of the 3 farm laws till further orders. And these further orders will perhaps come after there is some sort of conclusive result that comes from the committee, the 4-member committee that's been set up by the Supreme Court. This is going to be considered as a setback for the centre, Anand, but also as a setback for the farmers who didn't want a committee to be set up. They wanted the Supreme Court to directly pass an order on the rollback of farm laws. That hasn't happened either. Well, interestingly, Akshita, one thing is still missing from these flashes as of now is that will there be a time frame for this committee to submit its reports? That is not clear as of now, but we are sure once we get the final orders, it will be definitely mentioned in that as to what will be the time frame during which this committee will have to give its report after talking to all the interested parties. That remains to be seen. Who will be the members? Again, that remains to be seen. Perhaps that will be part of the final order, because here the representatives of the farmer unions who were asked yesterday by the Supreme Court bench to suggest some of the names, they are conspicuous by the absence. The centre has also not spoken its mind during the hearing as to who all will be part of the hearings. Now, let me just try and take you to some of the legal representatives here who are speaking to the media as of now, Akshita. Sure. Let me just try and get these legal representatives here. जस्टिस कुरियन जोसेफ ये नाम सुझाए, हमने भी सुझाए और भी नाम सुझाएगा, उन पर विचार करेगी और कमेटी गठित की जाएगी। आगे कमेटी गठित में हमने जो भारतीय किसान यूनियन और किसानों के जो विभिन्न संगठन हैं, 400 हैं या 500 हैं, उन सभी किसानों के संगठनों को उसमें कमेटी में मेंबर रखा जाए, सदस्य रखा जाए। वो कमेटी में अपनी बात रखें, अपने तथ्यों को रखें। ये पूरे देश के किसानों की फैथ और विश्वास का मामला है। उनको लेकर क्या कहेंगे? उसको भी लेकर सीजीआई ने गुस्सा किया। हाँ, उसके लिए जो वकील थे वो एक्चुअली यही था उसमें, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कह रहे थे कि हम किसानों के रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो थे नहीं, इसलिए वो आज नहीं आए। आपको लगता है क्या कि एक बड़ा झटका है इस पूरी हियरिंग में, क्योंकि जो किसान बैठे हैं वहाँ पे किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित है और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो जो सके। किसान संगठन बैठे हैं बॉर्डर पे वो तो आए ही नहीं है, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे। इसको किस तरह से समझाया और कितना समय लगेगा? ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है। ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी। और वकील साहब ये बताइए, वो सरकार बताएगी। 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं। सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है
अभी लागू होने का कोई विषय नहीं। अपना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी, ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट में हियरिंग में तक में नहीं आए, तो आपको उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास, मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है। मैंने कहा इसका जो ये आंदोलन है, इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं कर सकते। ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। लेकिन वहाँ पे कोर्ट में सरकार के वकील कह रहे हैं कि इसमें खाली को 1 घंटे बाद का दे दो परेड में शामिल होने का। भाई उनकी 6 बजे निकलती है, हमको 7 बजे का दे दो। एक वकील ने इस पे आज ये कहा है, एमएल शर्मा ने, कि किसान ये चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर आकर उनसे मिले, तो कोर्ट ने साफ कहा है कि प्राइम मिनिस्टर तो उसमें पार्टी है ही नहीं। आप लोग की इस तरीके की मांग भी रही है कि ना हम प्रधान, हमने तो ये हमारे तो सरकार से हमारा हुआ है। आज के बाद क्या रूपरेखा की? हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्या स्थिति होगी? आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन हमारा खत्म नहीं है, हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है So that is the first reaction from Rakesh Tiket for